In the today class, we will see validation. Okay, validation means checking the user input before processing it. Okay, we will check the user input which will come from the client or a postman. We will validate those fields. Okay, if the fields satisfy those criteria, it will processed further, otherwise the exception will be thrown. Okay, for example, the name should not be empty, right? And email should be valid. Okay, and if we are mentioning any field as a age, if you want to mention like above 18 people and below 16 people, 15 age people can only processed. Okay, and the password length, yeah, password field length should be greater than or equal to 8. Okay, if those fields satisfy the criteria, then only it will process further. Okay, there are some basic annotations. At the rate not null, which means field should not be null. Okay, and not empty means it is a combination of not null and not empty. Okay, and size, we can mention the fields as a size, minimum size and maximum size we can give. And email, like if we use at the rate email, it should be the valid email format. Okay, means that email consists of at the rate in that email address. Okay, if you will at the rate positive, the field should be positive number. Okay, okay, the first step. Okay, first step to achieve the validation is we need to uh, the application should be a web application only. Okay, in that we need to add this dependency. Okay, that is Spring Boot starter validation. Okay, and second step is add the required annotation on the fields in the entity class. Okay, we need to add the annotations. Okay, these annotations whichever we required in our application, we need to mention those fields in the those annotations on the field. Okay, step 3 is you need to add the at the rate valid annotation in the controller so that it can validate those fields in the controller only. Okay, fourth step, we need to create the method in the global exception handler class. Okay, we need to create this method. Okay, handle validation error method. Okay, in the global exception handler class. Okay, we will see whatever the written in this method. Okay, while doing the code. Okay, these are the steps. Okay, let me open the IntelliJ. Okay, first step, what I have told, I need to add the dependency. Okay, I have already added the dependency Spring Boot starter validation. Okay, you can add in the pom.xml above or below, anywhere in the pom.xml. Okay, inside the dependencies tag only. Okay, second step is we need to annotate the fields with the those annotations. Okay, for example, here I have mentioned the field as a id. Okay, which is of a int type. Okay, I don't want to save the fields whichever their ids are नेगेटिव इन. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करना है. ओके, किसका आईडी नेगेटिव है उनको स्टोर नहीं करना है. तो अगर मैंने एट द रेट पॉजिटिव ओके अनोटेशन मेंशन किया है. ओके, देन व्हाट हैपन्स ना, इट विल नॉट अलाउ अस टू स्टोर द नेगेटिव आईडी. ओके, एंड we can mention a message also like id cannot be negative. Okay, and for example name field. Okay,
For the name field, I have mentioned @blank, means it should not be null and it should not be empty. Okay, like that I have mentioned the @email, okay, on the email field. See here, password, okay, this is the @size annotation. Here we can mention the minimum size and the maximum size also, okay, by using the min 8 we have written, means it should be 8 characters. And if you want to restrict the maximum also, like for example 12 characters, 16 characters, we can mention that also, max, okay. And see here we can directly use @min and we have to provide the value, okay. And we can mention the message also, okay. एंटिटी क्लास सेम ही रहता है, ओके। हम एक्स्ट्रा एक ही चीज़ ऐड करें, जो फील्ड्स के अंदर हमको वैलिडेशन लगाना है उन फील्ड्स को हमने अनोटेट करे हैं रिक्वायर्ड अनोटेशंस के साथ, ओके। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था @valid annotations, ओके। हम @valid annotation स्प्रिंग बूट के अंदर ऐड करते हैं, ओके। @valid, okay, here I have added the @valid, okay. I want to check or I want to validate these fields while saving the data, right? Whenever the request will come to the controller, at that time only I want to validate those fields, okay. Then I have to create the method in the global exception handler class, okay. This is the global exception handler class, okay. I have created the method handle validation errors, okay. जैसे हम दूसरा एक्सेप्शंस के लिए मेथड क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही इसके लिए भी क्रिएट करना है, ओके। ये मेथड आर्गुमेंट में क्या लेता है बोले तो, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये एक इनबिल्ट क्लास है, ओके। हमको जैसा यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए हम क्लास क्रिएट करके उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे ना, तो वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट है। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन एक इनबिल्ट क्लास है, ओके। सो हम डायरेक्टली उस क्लास का नेम मेंशन करके रेफरेंस वेरिएबल मेंशन करेंगे, ओके। आई हैव क्रिएटेड वन मैप, ओके, विच विल स्टोर द which will store the objects of a hash map, okay. What is the use of hash map? It will store the key value pair, okay. Here the string is a key and string is a value, okay. And in this ex reference variable there is a get binding result method is there, okay, and get field errors, okay. गेट बाइंडिंग रिजल्ट्स मीन्स वो जो रिजल्ट थ्रो करेगा, ओके। गेट फील्ड एरर्स मीन्स जो फील्ड्स, ओके, जो यूज़र फील्ड्स सेटिस्फाई नहीं करेगा एक क्राइटेरिया, ओके, वो एरर्स इधर आएंगे, गेट फील्ड एरर्स के अंदर आएंगे, ओके। वी आर यूजिंग जावा 8 फीचर्स, ओके। जावा 8 फीचर का फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं इधर, okay, don't worry about this, okay, we will learn in upcoming classes. बस इतना देखो कि एरर ऑब्जेक्ट, ओके, एरर ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, हम क्या आइटरेट कर रहे हैं, एरर्स डॉट पुट, मतलब इस एरर्स के अंदर, ओके, हम पुट कर रहे, पुट मतलब ऐड कर रहे, एरर्स डॉट गेट फील्ड, ओके। इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर जो गेट फील्ड्स मीन्स ये जो फील्ड है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओके, ये फील्ड, एंड गेट डिफॉल्ट मैसेज क्या दिए हम, वैलिड, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। फॉर एग्जांपल अभी नेम जो फील्ड है ये हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, गेट फील्ड बोले तो नेम एंड एरर मैसेज बोले तो उसका रिगार्डिंग जो मैसेज हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज दिए हैं वो आके
इस एरर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके, हम फॉर ईच लूप इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर मे बी मल्टीपल फेलियर्स में ऑकर। ओके, नेम फील्ड भी मतलब मैच नहीं कर सकता है वो क्राइटेरिया, ईमेल भी, पासवर्ड भी। ओके, अगर सिंगल रहा तो हमको आइटरेट करने की नेसेसरी नहीं था, लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया मैच नहीं हो सकता है, उसके लिए इनके ऊपर आइटरेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं। ओके, बस तुम इतना देखो, मतलब ये क्या लिखा है क्या नहीं, वो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको एक बार देख लो। ओके, गेट फील्ड मतलब जो एंटिटी के अंदर हम फील्ड लिखे हैं, गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज मतलब जो मैसेज हमने दिए हैं, बस। ओके, इनके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, अभी जो भी हमारा एरर्स, ओके, फील्ड्स एंड उसका रिलेटेड एरर है, ओके, वो इस एरर्स के अंदर आ गए। ओके, मैप के अंदर। ओके, तो मैप क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर। की क्या होगा इधर, स्ट्रिंग टाइप, एंड वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप। ओके, इधर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब अगर समझो कि नेम फील्ड ना वो वैलिडेशन मैच नहीं कर रहा है, ओके, तो इधर क्या आएगा, स्ट्रिंग की जगह नेम एंड उसका एरर। ओके, मैं तुमको दिखाता हूँ। ओके, तो जो एरर्स आएंगे, मतलब ये जो भी एरर स्टोर हो जाएंगे, वो एरर रिटर्न करेगा। ओके, उसका रिटर्न टाइप है मैप। ओके, मैप, राइट, वी हैव क्रिएटेड द मैप। ओके, वी विल रिटर्न दोस एरर्स। ओके, let me run this application. Okay, it is running on port 9090. Let me open the postman. Okay, for example, one. Okay, see, this is the JSON ऑब्जेक्ट। ओके, मैं भेजना चाहता हूँ, डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहता हूँ। ओके, ये जो फील्ड्स है, आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, ईमेल फील्ड है, एज फील्ड है। ओके, these will pass all the criteria। Okay, so if those will pass all the criteria, I will get 200 okay successful status। Okay, for example, I will make this as a negative। Okay, what happens, it will throw the exception। See, id cannot be negative। Okay, I have told you, okay, here I have told you that it will store the key value pair in the string। Okay, in the string, okay, it will store this id, and in this string it will store this error। Okay, id cannot be negative। Okay, the error dot get field means it will get this field, which field is throwing the error, and the default message means which we have mentioned in the entity class, this default message will be throw। Okay, for example, why we have used the for each। Okay, if there is a single error then it's okay। For example, more than one fields are failing to achieve the criteria, so to iterate over these errors, okay, to iterate over these errors we need the for each, that's why we have used the for each here। okay, तो इसके बारे में उतना ध्यान मत दो, इसको देख के प्रैक्टिस करो, आगे आगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।